Today's topic is accounting as a language and accounting as a science or art. ठीक है, अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं अकाउंटिंग को, और दूसरा है उसे साइंस कहते हैं या फिर आर्ट कहते हैं. सो अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट इट इज़ सेड दैट अकाउंटिंग इज़ नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन थ्रू बाय वे ऑफ अकाउंटिंग वी कैन प्रोवाइड टू अदर पर्सन, ओके, टू द पीपल. नाउ थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड. जो भी बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के फॉर्म में हम मेंटेन करते हैं. एंड दोज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प्स मेनी पीपल इन अंडरस्टैंडिंग the position of your business, the soundness of your business. So in a way it transacts the people about your business. Then through language, either by writing, speaking, analyzing or interpreting, any content is described or explained by one person to the other. ठीक है, लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि चाहे हम लिख के किसी को बताएंगे, चाहे बोल के बताएंगे, ठीक है, चाहे इंटरप्रेट करके बताएंगे. सो लैंग्वेज हेल्प्स अस इन communicating with the other person. Now this function is also performed by the accounting by providing information of business activities or results to the related parties. ठीक है, जो भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स है, अगर उन्हें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सो वी विल यूज अकाउंटिंग टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. लैंग्वेज इज यूज्ड विथ इट्स ओन प्रीडिटरमाइंड नॉर्म्स. ठीक है, लैंग्वेज के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं. ठीक है, कि अगर आप गुजराती यूज़ कर रहे हो तो गुजराती का अपना ग्रामर आपको पहले समझना पड़ेगा. इन द सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट यू विल स्टडी इन लेटर क्लासेस. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन नॉर्म्स, रूल्स. सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग business activities. Now another thing is language has a feature of flexibility. But means flexibility means it can we can make some changes if required. In the same way in accounting also, over a period of time, if the change is required, then we can make changes in accounting also. So in a way some points are similar in accounting and language, so we can say that accounting is also a language, okay, because it provides information regarding business activity by way of accounting records to the persons who are interested in knowing the position of your business. Then another point is accounting a science or an art? Accounting science कहा जा सकता है या art कहा जा सकता है. क्या है accounting? Now first of all we have to understand what is science and what is art. So साइंस जब आपने पढ़ा तो बेसिक जब आपने शुरुआत की होगी तो आपको पहले डेफिनेशन आई होगी कि व्हाट इज साइंस. सो साइंस इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीन्स आप चाहे किसी से भी पूछ लो वो उसे एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, नो बडी विल डिनाई. सो इट इज़ बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स एंड सम रीजनिंग वी कैन से. सो everybody will accept those principles and rules. So science is something which is based on rules and principle. Accounting is also, as we have discussed earlier in the previous point, that it is also based on some rules and principles. Okay, accounting में भी जो rules हम follow करेंगे, principles हम follow करेंगे, and those principles are universally acceptable. If the person is writing account in one part of India, for example in Gujarat one person is writing account for the same transaction, if you will give it to the person who is living in Punjab, he will also write in the same way because it is based on the same rule and principles. Same rules and principles are followed all over in India. Okay, so there will not be any change in writing the method of accounting because it is based on some rules, some principles and some accounting standards. So we can say that accounting is also a science. Now accounting is an art. Whether accounting is said to be an art, so what is art? Art is something which is based on specialized skill. You have, for example, if you have the skill of singing, you have the skill of dancing, you have the skill of drawing. Okay, so it is, if
a particular skill which you possess, and you can strengthen your skill by way of practice or training. Accounting is also like that. Everybody cannot write account in a systematic manner. Okay, for that you need a specialized skill, you need some training, you need practice. Then only you can strengthen your accounting. Okay, the way we write accounts, it requires some practice and training and also a skill. So we can say that accounting is also an art. So accounting is also a language, accounting is also a science, and accounting is also an art. Apart from science, accounting is known as an art also, and accounting is mainly categorized into three categories. First is financial accounting, another is cost accounting, and third one is management accounting. These are the three branches of account, and whenever you will move further now in college and graduation, post graduation, then you will study this financial accounting, cost accounting, and management accounting. But right now you have to study the basic part of accounting.